Today we will discuss about half-life period. The time which is required to convert the 50% of the reactant into product, it is called as half-life period. It is represented as T stands for time and half. It shows the half-life. Here are some examples of the half-life. Decomposition of N2O5. The half-life period for the decomposition of N2O5 at 45 degrees Celsius is 24 minutes. It's mean 24 मिनट्स के अंदर जब हमारे पास टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होगा तो N2O5 जो है 50% जो है कन्वर्ट हो चुका होगा अपने प्रोडक्ट में. 2N2O5 reversible reaction 2N2O4 plus O2 half-life 24 minutes at 25 degrees Celsius. It is a first order reaction. It means if we decompose 0.1 mole per decimeter cube of N2O5 at 45 degrees Celsius, then after 24 minutes 0.05 moles per decimeter cube of N2O5 will be left behind. मतलब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी 0.1 थी और जब 24 मिनट्स गुजर गए तो ये 50% डिकम्पोज हो गया और हमारे पास जो कंसंट्रेशन आई 0.05 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. सिमिलरली आफ्टर 48 मिनट्स इट्स कंसंट्रेशन विल बिकम 0.025 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. मीन्स टू से जो हमारे पास 0.05 बचा था आफ्टर 24 मिनट्स ये अगेन डिकम्पोज हुआ और 50% जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आई थी वो क्या आई थी 25% आ गया था हमारे पास प्रोडक्ट. 72 मिनट्स के बाद हम देखेंगे अगर तो ये वाला 0.25 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आफ्टर 24 मिनट्स अगेन जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगे. 50% डिकम्पोज होंगे और हमारे पास 25% से कंसंट्रेशन आ जाएगी 12.5% और ये हमारे पास कंसंट्रेशन आई फाइनल आफ्टर 72 मिनट्स. So half-life period for the first order reaction does not depends upon the initial concentration of the reactant. तो हमारे पास इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि इनिशियल तो हमारे पास 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब था, लेकिन हमारे पास जब फाइनल आया जब हमने 72 मिनट्स के बाद देखा तो इट्स विल बी 0.012 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. तो हमारे पास हर 24 मिनट के बाद 50% जो है रिएक्टेंट डिकम्पोज हो चुका होगा अपने प्रोडक्ट में. नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल वी see here disintegration of the uranium. It is radioactive element. The disintegration of radioactive element uranium-235 and 92 has half-life of 7.1 into 10 raised to power 8 or 710 million years. It means अगर हम radioactive element ये वाला यूरेनियम लेंगे तो after 710 million years after it will change into its product. 50% change 0.5 kilogram uranium. So 1 kg uranium after 710 million years change into 0.5 kg and 0.5 kg uranium again after 710 million years it's changed into 0.25 kilogram uranium. So after 710 million years uranium converted into its daughter element, and disintegration of radioactive substance independent of the amount of that substance. Now we discuss the half-life period and order of reaction. What is the relation between half-life period and order of reaction? The half-life period of any order of reaction is inversely proportional to its concentration raised to the power 1 less than order of that reaction. It is a general formula for half-life. T stands for time and half, N stands for number of order. 1 by A is the concentration, N minus 1. T half-life period and order of reaction, A initial concentration of the reactant. For first order reaction N is equal to 1, so we put here 1 proportional
proportionality sign, 1 by a 1 minus 1. We put here 1, it is the value of n. Answer will be a naught, means it does not depends upon the initial concentration of the reactant. Since half-life is equal to, when we remove this sign, k is the constant, so the half-life value has 0.693 over k. It is for first order reaction. For second order reaction, n is equal to 2. Put the value of n in this formula, put here 2, and a2 minus 1, it is a value of n. So half-life for second order is equal to 1 over a1. Finally half-life for second order is equal to 1 over ka. जब हम proportionality constant हटाएंगे तो हमारे पास constant k आ जाएगा. It is noted that in this case half-life is inversely proportional to the initial concentration of the reactant. For third order reaction, n is equal to 3, we put here 3, and inversely proportional to the initial concentration. 3 minus 1, it is also n value, and 3 minus 1 2. So half-life for third order is equal to 1.5 ka square. Half-life for the second order is inversely proportional to the square of the initial concentration of the reactant. 50% of the hypothetical first order reaction completes in 1 hour. The remaining 50% requires more than 1 hour to complete. Solution. स्टेटमेंट ये है कि 50% हमारे पास कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कंप्लीट होता है उसका फर्स्ट ऑर्डर 1 घंटे में हो जाता है. तो 1 घंटे में 50% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है. लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रिएक्टेंट जो है 100% शो करने में अपनी हाफ लाइफ. व्हाट इज़ द रीज़न? First order reaction is independent of the initial concentration of the reactant. Half-life for first order inversely proportional to the initial concentration.